happening around the different industries right now over here as well. When the people are being asked to start working from home, now it's a bit of a challenging situation started happening because whosoever has been asked to go back and started working from home, now this is something which people were not very much familiar with. So the challenge started happening was number one, उसमें I should highlight on that part के उसमें क्या हुआ कि the people who have been working at home, now they started thinking, oh, might be it is a sort of a day off for them or it's like a vacation time for them, and it was very hard to give that realization back to the people. Now you are still working, we have just changed the pattern. So that was one of the challenge which we have seen in the companies which has been happened. Number two, यहाँ पे और भी चीज़ें आइडेंटिफाई हुई कि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इतने टेक्नोलॉजी ट्यून नहीं होते, एंड देन टू रिलाई ऑन अ टेक्नोलॉजी वाज अनदर challenge it has been emerged as well. Then there was an instance it had been happened because when you have been working from your office, of course you have been very much clear what is the timeline in which you have to be worked. But once you get back to home, now the challenge started happening that it is very hard to draw a line where you have to stop and where you have to actually work on to आपका जो घर का मामला है आपको और जो ऑफिस का मामला है, इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट स्टार्टेड हैपनिंग विद द पीपल कि कहाँ पे उस लाइन को ड्रॉ किया जाए जहाँ पे हमें पता लगे. फिर चूंकि इट वाज अ डिसरप्शन, इट हैज़ बीन हैपन, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल. तो द प्रॉब्लम स्टार्टेड हैपनिंग कि आप इस न्यू नॉर्मल में बहुत सारी चीज़ें चूँकि अभी एक ट्रांजिट मोड में है, तो बहुत सारे लोगों के कंसर्न ये भी हाईलाइट हुए. The people were not happy with the situation because they said might be they are being overloaded on that instance. Some persons are not been there. Some sort of a rotational sort of stuff has been happen. Belonging to what I've seen in the oil and gas sector as well. वो लोग जिनकी rotation 4 days off, 4 days work होता था, they are being asked to stay in the site for 28 days for work, 28 days to coming back. And even if they are going to go back, they have to actually they have to quarantine themselves. It was a big psychological impact on the people. उनकी जो और फिर इसके साथ साथ जो बहुत सारी चीज़ें चैलेंज हुई वो ये हुआ कि आपकी जो लाइफ में एक सर्टन सॉर्ट ऑफ अनसर्टनिटी आ गई, और फिर ये बहुत सारी जो खबरें और स्टैटिस्टिक्स और अननोन सॉर्ट ऑफ थिंग, इट हैज़ क्रिएटेड अ बिट ऑफ चैलेंज फॉर एवरी पर्सन एट ऑल द लेवल. अब मैं यहाँ पे अब आपको जो चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि मैं एक मेटाफोर यूज़ करता हूँ. अब हम इसको सोचते हैं कि इस मेटाफोर में क्या हुआ और व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन हैपेंड. सो फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग. नाउ दिस इज एन एप्पल इन माय हैंड. इफ आई आस्क यू, इफ आई स्क्वीज दैट एप्पल, आई कैन गेट द जूस ऑफ दैट एप्पल. नाउ इफ आई टेक एन ऑरेंज and if I squeeze it, I can get the orange juice out of it. Now this metaphor, why I'm been using like this, practically speaking, in that challenging situation it happened कि जब हम लोग एक चैलेंज में गए हैं, so whatsoever our real self was inside, what was my real matter inside, during that stressful situation I'm being exposed to myself. ये चीज़ हुई है हकीकत में, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या हुआ, जो चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में आई, जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की कि इस पूरे जो प्रोसेस में द पीपल हु आर बीइंग पॉजिटिव बिफोर कोविड-19, देखने में आया दिस पीपल बिकम मोर पॉजिटिव ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग कोविड-19. जो लोग पहले नेगेटिव थे वो और ज़्यादा नेगेटिव हो गए, जो लोग पहले कंप्लेनिंग थे वो और ज़्यादा उनकी कंप्लेन बढ़ गई, और जो लोग they were having an attitude of gratitude, they become more gone into that side. So what is, first of all, COVID-19 has truly reflect our genuine character to ourselves. That is one thing what we have discovered about ourselves, how we respond to a stress, how we respond to that similar situations onto that. Now the question is, अब यहाँ पे हमें उस चीज़ पे जाते हैं कि जनाब कोविड-19 की सिचुएशन ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं. एवरी डे व्हेन वी हमें मीडिया से न्यूज़ मिलती है, हमें लोगों से न्यूज़ मिलती हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू अबाउट दैट, देयर इज़ अ बिट ऑफ अनसर्टेनिटी. वी आर नॉट प्रीटी मच श्योर ये कब चीज़ ख़त्म होगी, कब चलेगी, कब होगा, किस तरह का ये मामला चलेगा. तो मैनी ऑफ द पीपल दे हैव रिपोर्टेड कि दे हैव गॉन इनटू अ स्ट्रेस लेवल, उनका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो गया. And many of the people, they said even beyond stress they feel depressed about it. सबसे पहले हम इसको समझते हैं सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये स्ट्रेस ये होती क्या चीज़ है और ये डिप्रेशन क्या चीज़ होती है, इसके साथ क्या लेवल है. इसको सादा अल्फाज में ये समझ लें कि हम में से हर इंसान के जहन में
अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी जॉब के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से एक सर्टन मेंटल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम कैरी करते हैं अपने जहन के अंदर, और हमारी जो ज़िंदगी है इट्स एक्चुअली अ ट्रूली रिफ्लेक्टिव ऑफ दो स्टैंडर्ड्स विच वी कैरी विद इन आवरसेल्फ। सो मान लीजिए मैं अपने एक सर्टन रिलेशंस है मेरी अपनी फैमिली के साथ, सो दिस इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई मेंटल स्टैंडर्ड्स। If I'm being on certain income level, this is actually a reflection of my mental standards. If I'm mean to say the way I'm being having my lifestyle, this is certain mental standards. जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हों, जब आपको ये पता लगे कि मेरे जो मेंटल स्टैंडर्ड्स हैं अबाउट माई जॉब, अबाउट माई रिलेशन, अबाउट सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द पीपल एट्सेट्रा, और जो मेरी एग्जिस्टिंग रियलिटी है उसके अंदर गैप आ चुका है या उसके अंदर गैप आ रहा है, if this is a situation what is been happening, it mean I'm being in a stressful state. अच्छा, जब तक मैं stressful state में रहता हूं तो मुझे एक expectation रहती है कि someday, sometime this situation will reverse back. यानी जिस अंदाज में मैं काम कर रहा हूं थोड़ी सी disruption हो गई है, लेकिन after certain period in time, maybe a month or so, we revert back, we will come back to the same situation. Relationship हैं, disrupt हैं, boss के साथ कोई मामला बिगड़ा, but we are being able to make it up. As far as I'm living with that positive expectancy that this situation is going to be reversed back, I'm in a stressful state. Now, interesting part क्या होता है? जब ये stressful state prolong करती है for certain period in time, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो डिल्यूट होना शुरू हो जाती हैं, और मुझे ये चैलेंज लगता है कि नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रिवर्सल इनटू दैट। जब मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी वो गैप बड़ा हो जाता है दैट गोज़ अप टू दैट एक्सटेंट, जहाँ पे अब नाउ आई रियलाइज कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिवर्स बैक, एंड व्हाट इज़ माई मेंटल स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट इज़ माई करंट रियलिटी, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस विच इज़ इररिवर्सिबल। द पीपल एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन. That has been the linked part onto that their mental standards and their current reality is a lot of challenge. That is the reason